So, hello students. So, topic of our today's video is covalent bond. Chapter is chemical bonding, and before covalent bond, we have studied octave rule. So, according to octave rule, each and every electron or each and every element want to become stable, and for stability it will either lose electron or gain electron to complete it octet, or sometimes it's duplate in outermost orbit. So that was octave rule. Now after octave rule, there is a concept of covalent bond, which is proposed by Langmuir in 1990. So according to Langmuir, if a non-metal combine with another non-metal, then it makes a bond. That bond is called covalent bond by the sharing of electron. So let's understand covalent bond with the help of some example. So our first example is Cl2 molecule. इससे पहले क्या था? इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में ये कहा गया कि भाई जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं उनमें नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन को देखा गया, तो ये लगा कि नोबल गैसेस वाले जो है ज़्यादा स्टेबल हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी स्टेबल है. स्टेबल क्यों है? तो देखा गया इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे. दैट्स वाई ये सेटिस्फाइड थी इनकी वैलेंसी, ये बिल्कुल स्टेबल थे. और हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन थे जो प्लेट पूरा करता है. सो इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए वो स्टेबल हो जाएंगे, राइट. इसके बाद ये कॉन्सेप्ट आया, दूसरा कॉन्सेप्ट आया जिसमें कि इन्होंने बताया कि ये जो स्टेबिलिटी है ये इस तरह भी की जा सकती है कि लाइक ऐसा नहीं है कि Cl को स्टेबल होना है and there is a 7 electrons in outermost orbit of chlorine atom, so we have to add 1 atom of any other molecule. We can add 2 chlorine molecules, and there is the bond between these 2 chlorine molecules is these 2 chlorine atom is known as covalent bond. So देखते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो हियर वी हैव क्लोरीन Cl2 molecule. So first of all, what to do? We have to write dot structure of chlorine. Chlorine. 2 chlorines are there. So in chlorine atomic number is 17. Electronic configuration of chlorine will be 287. Outermost have 7 electron. So according to dot structure, here we can put 7 dots for 7 electron. That dot electron is represented by that dot. So 7 for 7 dots. Now chlorine, for stability chlorine need 1 electron. So here chlorine will take 1 electron from this first chlorine, will take 1 electron from second chlorine. Now this chlorine also want to stable. So for stability it take 1 electron of previous chlorine atom. So there is sharing of 1 electron pair, that is pair of electron, that is electron pair. Due to 1 electron pair, the bonding is called single bonding. And that is called covalent bond, single covalent bond.
If there is contribution or there is sharing of one pair of electron, then it is called single bond. If there is sharing of more than one or two electrons, two pair of electrons, then it is called double covalent bond. For example, suppose that we have O2. So oxygen, atomic number of oxygen is what? 8, 2 and 6. Now electron dot structure of that oxygen is O, symbol of oxygen, along with its electron in outermost orbit. So there is 6 electrons. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. And this oxygen needs 2 electrons to complete its octet. We have 2 oxygen atom, another oxygen atom. Again it's 6 electron in outermost orbit. Now, first oxygen atom needs 2 electrons to complete its octet. So 2 electrons. This oxygen will also need 2 electrons to complete its octet, so it will take 2 electrons from this previous oxygen. So there is sharing of 2 pairs of electron. 2 pairs of electron. 1, 2. That's why this type of bonding is called double bond or double covalent bond. Single covalent bond and double covalent bond. You can write this one, represent this single Cl. O double bond O. Right? Now what about triple bond? How triple bond is formed between 2 atoms. Now for triple covalent bonding, how triple covalent bonding takes place? When combining atoms share 3 electron pairs, then, so in case of nitrogen, take the example of nitrogen molecule N2. Atomic number of nitrogen is what? Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen. Right? That is 7. So 2 and 5. So this nitrogen required 3 more electrons to complete its octet. And we have 2 atoms of nitrogen. So each atom needs 3 electrons. So there is a sharing of 3 pairs of electrons. Let us see. Nitrogen surrounded by 5 electrons. 5 electrons. 1, 2, 3, 4, 5. Dot. It is dot, which indicate number of electron. Another nitrogen having 1, 2, 3, 4, 5 electrons. So each nitrogen requires 3 electrons. So there is sharing of 3 electrons to complete its octet. Now that is the triple bond between nitrogen and nitrogen. Due to sharing of 3 pairs of electrons. 3 pair of electrons shared here. So the bonding is triple bond, triple covalent bond. That is triple covalent bond. And we can represent N triple bond N. N2 as N triple bond N also. So that is the way of representing our single bond, double bond and triple bond of triple covalent bond of triple covalent bond, right? So now we will learn a few more structures of covalent bond, like H2O. How H2O is formed, and which type of covalent bond is present in H2O. So there is 2 H molecule, so 2 H atom and 1 oxygen atom. So 1 oxygen atom surrounded by 2 hydrogen atom. Okay. And now what to do? We have to
raw electron dot structure for oxygen as well as hydrogen. So hydrogen, one electrons in there is one electron in outermost orbit of hydrogen. Each hydrogen have one electron. What about oxygen? Oxygen have 6 electrons in outermost orbit. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now each atom want to stable itself. So for stability of hydrogen it need one electron. So hydrogen take one electron from oxygen to complete its duplet. Here oxygen one electron is taken from that. Now what about ऑक्सीजन? भाई ऑक्टेट तो दोनों का कंप्लीट होना चाहिए, स्टेबिलिटी तो दोनों की होनी चाहिए. अगर हाइड्रोजन स्टेबल है तो ऑक्सीजन भी तो स्टेबल होना चाहिए, तब तो वो बॉन्ड बनाएगा. अदरवाइज वो बॉन्ड कंपाउंड बनेगा और तुरंत ब्रेक हो जाएगा, है ना. स्टेबिलिटी ही नहीं होगी. अगर दोनों ऑक्टेट कंप्लीट किए होंगे तो स्टेबिलिटी होगी. यहाँ पर देखते हैं व्हाट हैपेंड. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको भी ले लेगा. तो 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन के खुद के हैं. एक इस हाइड्रोजन से लेगा, एक इस हाइड्रोजन से. 8 ऑक्टेट हो जाएगा. तो ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन से भी एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया. सो एक इलेक्ट्रॉन हर एक हाइड्रोजन को, ईच हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ऑक्सीजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया. सो यहाँ पर शेयरिंग हुई एक पेयर की. तो एक पेयर की जब शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है. दैट्स व्हाई देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन these two. So hydrogen, single bond oxygen, single bond hydrogen, and 2 lone pair are available. Lone pair मतलब होता है कि ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन व्हिच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल बॉन्डिंग. So this is our what? Covalent bond and covalent compounds. So tomorrow we will discuss about some more Lewis dot structure of compounds. Thanks for today.